Hey guys, I'm Tanya and we are in the month of March now. धूप से पता चल रहा है winters are going to come to an end. So we thought that before this ends, we should do some fun snow activities. So today we are heading to the Horseshoe Resort, which is located in Barrie, 1.5 hours away from Toronto, and we are going to be doing some skiing, snow tubing and have lots of fun. I'm going to take you guys with me to this journey. We are going to be taking a cab to get here. पहले सोचा था पब्लिक ट्रांजिट से जाते हैं विच इज़ पॉसिबल बट वी आर ऑलरेडी रनिंग अ लिटिल लेट ऑन टाइम सो वी आर गोना टेक अ कैब एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट नाउ एंड लेट्स गो द जर्नी बिगिंस एंड कोई भी काम खाली पेट नहीं करना चाहिए which is why we decided to take a stop in Barrie just before the Horseshoe Resort to grab some breakfast. And also, since Toronto is still in lockdown, we did not want to miss an opportunity to dine in a restaurant. And we are in Barrie finally. And first stop for today is having some breakfast at the corner shop, which looks like an old and rustic restaurant, a very famous one here in Barrie. So let's go in. Guys, the food is finally here and trust me, it is so nice to have a dine-in experience. After an amazing lunch at this amazing place, we are now heading to Horseshoe Resort and we are going to do some skiing and snow tubing there. Word of advice guys, प्लीज़ जब आपका खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले कैब बुक कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ आधे घंटे से रुके हमारी कैब के लिए एंड मे बी बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल टाउन जहाँ पे ज़्यादा ऊबर्स नहीं है तो इट्स टेकिंग मोर टाइम फॉर देम टू कम सो कीप दैट इन माइंड एंड वी आर रियली एक्साइटेड. Arrived at the Horseshoe Resort and it looks so beautiful. Our first activity for today is skiing. So we are collecting the ski lift pass which we had already booked online for $45 per person, which allows you to go up the hill in the lift as many times as you want. The next step is to rent ski gear. So finally at the ski area and you need to rent your ski shoes, your skis, your helmet and all of those things. So we are in this rental place which is right outside where the skiing happens. So यहाँ से हमने boots लिए हैं, helmet लिए हैं and guys it was a bit of a task to get into these shoes and it's also a little difficult to walk but we're trying. First time है देखते हैं कैसा होता है. This is me struggling to walk in the ski boots. But overall, the rental process was pretty easy. You just fill a form, tell them your shoe size, and then wear your gear and off you go to wait in the line for the ski lift. Guys, we are on the snow lift now and it's a little scary but we are excited. We are on the ski hill right now and हमने try तो बहुत की but it's not easy. बहुत मुश्किल है. 2-3 बार गिरे, हाथ पे थोड़ी लग भी गई, मज़ा आया but it's scary. It's not easy. So we are trying, थोड़ी सी practice कर रहे हैं. Let's see how it goes. But the view is beautiful. The ride was awesome. My
expectation was to ski effortlessly like them. But this is what I ended up doing instead. So we decided to just go push ourselves down this way and go. Guys, first thing, if you go, get gloves. I don't know what I was thinking. मैं अपने gloves नीचे छोड़ आई. So gloves लीजिए because your hands are going to freeze. And उनसे पूछ लीजिए कि ये स्लोप कितनी स्टीप है, because हम गलती से एडवांस वाले स्लोप पे आ गए एंड किसी ने हमें बताया नहीं. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. तो गिरते पड़ते हम फाइनली नीचे पहुंच गए एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. स्कीइंग हिल एंड ट्रस्ट मी इतना अच्छा लग रहा है वो स्नो शूज़ निकाल के अपने शूज़ में आना. जस्ट आई फील सो लाइट एंड अच्छा था. इट वॉज एन एक्सपीरियंस. डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है एंड बहुत बार गिरे. यू कैन हर्ट योर सेल्फ. आई वुड से बी केयरफुल फॉर ट्राइंग, बट इट इज़ वेरी टायरिंग एंड it's a little risky. And now we are going to head to snow tubing, which is a little more fun. So हम आज जा रहे हैं. Let's see how that goes. Unlike skiing, आप snow tubing पूरा दिन नहीं कर सकते. You have to book a specific slot. A 3-hour slot would cost you $45. And again, you can either book it online या आप वहाँ जाके भी book कर सकते हो. Other than that, it was pretty easy. You just get up the hill with your tube and then slide down the hill. You can slide down as many times as you want in those 3 hours. And for our last slide, we decided to do something exciting. Guys, how was it? This was so much fun! We had a great time snow tubing and now we are back at the main reception area of the resort and we are just taking a cab back home. We are exhausted, but it was a great day and I'm gonna reach home and tell you all the details and give you a final opinion on the hotel. We are back home after a long day. Guys, कैसा लगा? Very tired. मेरे पूरे साल भर का वर्कआउट. I think हमने एटलीस्ट जो लंच में खाया था उसका तो वर्कआउट हो ही गया. एंड टू रिकवर फ्रॉम दिस टायर्डनेस हमने और बहुत सारा टेस्टी खाना घर पे ऑर्डर किया है. सो वी आर गोना हेड टू ईट दैट नाउ. तो गाइस ओवरऑल ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, बट पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि स्कीइंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड गो टू डू इट ओनली इफ़ यू आर रेडी टू फॉल, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया एंड इट्स नॉट ईजी. एक दिन में तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू इवन गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द स्नो व्हेन यू फॉल, क्योंकि वो स्की बूट्स और वो स्की इतने हैवी है. सो go for it, it's definitely worth a try, but heads up guys, difficult है, बहुत difficult है. Whereas on the other hand, snow tubing was definitely worth it. बहुत 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 मज़ा आया. It's like a roller coaster ride in the snow, so it was completely fun and we just wanted to do it again and again. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. It was very nice.
हम दोनों रास्ते टू एंड फ्रो कैब से गए. यू कैन ऑल्सो गो बाय पब्लिक ट्रांजिट, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. बट इट इज़ क्लोज टू टोरंटो, इट इज़ लोकेटेड इन ऑन्टेरियो. सो ऑल ऑफ यू पीपल हु स्टे इन ऑन्टेरियो, यू कैन गो टू दिस प्लेस. देयर आर मेनी अदर स्की रिजॉर्ट्स इज़ वेल, सो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई. विंटर में एक बार तो ट्राई कीजिए ये सब. आई होप यू गाइज enjoyed my 1-day mini trip. Guys, don't forget to like, comment and subscribe to my channel, and if you have any more video suggestions or anything like that, drop them down in the comment section, and I will see you guys in another video. Bye.